पधारी हुई हैं, कृपया मंच पर पधारें। अचेंद्र रूपानाथ आए, कृपया मंच पर अपने विचार प्रकट करें। प्लीज कम ऑन द स्टेज। नमस्कार सबके लिए। क्षमा कीजिए, क्या मैं हिंदी नहीं बोलती हूँ? Yes. So it's so big. I'm so happy and so impressed to be here, because I'm not professional lesser. I just would like to share something that Guruji yesterday asked me just to share, because the name of this seminar is Spiritual Life Tantra, and I can't say that Tantra we can gave this idea through words. I think there is something behind this words. There is something more, and I perceive that this key is a tantra. इस संगोष्ठी में उपस्थित होकर मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, तथा यद्यपि मैं तंत्र की कोई व्यावसायिक पारंगत विदुषी नहीं हूँ, फिर भी आपके साथ अपने व्यवहारिक अनुभवों को साझा करना चाहती हूँ। Yes, Atman is in a woman body in this life, and it's incredible because I got this blessing to come here and receive a diksha and realize some tantra sadhana to be in a woman body. In a woman body. Woman. Yes. Okay. स्त्री शरीर में उपस्थित आत्मा और उसके वास्तविक स्वरूप को अनुभूत करने के लिए तंत्र पद्धति बहुत ही सहायक है। I seriously practice Bagalamukhi sadhana, and 2 years ago I arrived here, and Guruji Ramesh Chandra Sharma gave me anugraha. So I will tell about my experience at that time. 2 वर्ष पूर्व मैं गुरुजी से दीक्षित हुई, तथा तब से अब तक नियत रूप से बगलामुखी साधना व्यवहृत कर रही हूँ। Tantra is method, and at that time I realized something very physically to feel what with this realization of sadhana could be. तंत्र अनिवार्यतः एक अनुभूति है, एक संदेश है, तथा उस अनुभूति को जो कि मेरे अपने शरीर पर जिस अनुभव को मैंने अनुभूत किया है उसे मैं आपके सामने रखूं। And I had this great experience to be in a Guruji praying room and to sit and just make a dhyan there, meditation there, and to feel real power. What should I get during this sadhana? गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके मुझे अत्यंत शक्ति की अनुभूति होती थी ध्यान करते हुए, साधना करते हुए। And this power, this Shakti will be so big that after to come back in my country, I realized many things in society. I fulfill all my dreams, and I can say that Tantra really work. वह शक्ति इतनी तीव्र थी कि अपने देश वापस जाने के पश्चात भी मुझे बहुत सारी समस्याएं अपने देश में, अपने समाज में जो समस्याएं थीं वह समझ में आने लगी। Because in West, people are completely different. They have completely different way of thinking, and they can't accept that they can work by ourselves and do sadhana each day in a yes. They are lazy. पाश्चात्य समाज में सोचने की पद्धति, विचार की पद्धति बहुत ही भिन्न है, तथा तंत्र जैसी अनुभूति परक विद्या पद्धति के विषय में वे सोच भी नहीं सकते। And so in this group, I think we are a little bit unique, because it's not regularly we can say in a West that people are doing sadhana and paying the most important thing, that is time to do something more from Bhagavan, because Tantra, it will take a lot of work with yourself. तंत्र अत्यंत श्रम साध्य विद्या है, और हमारे ग्रुप में भी, हमारे मंडली में भी जो साधक आदि हैं वे कभी कभी आलस्य और प्रमाद के कारण उतना समय नहीं दे पाते हैं तंत्र को।
And now we are here, we are practitioner. We practice day by day, many hours. We chant, jap, we make homa, we tell this knowledge, spread this knowledge around our countries. We are real walkers. अब धीरे धीरे करके हम श्रम करते हुए तंत्र की गहराइयों को अनुभूत कर रहे हैं. That's why it's so important to go meet Guru Devs and take real Shakti path, because we need it, because we are just some of. इसी कारण गुरु का सान्निध्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना यह श्रम साध्य व्यापार संभव न हो पाता. Yes, and yesterday Guruji asked me to explain about experience that I had yesterday. And yesterday Guruji gave Diksha, and again one is the same, the most spiritual place in this reality, which is Guru praying room. And I had experience, yes, I feel really Bagalamukhi Darshan. That's, of course, that my eyes can't see, and I just see yellow light, very bright. I told Guruji, and he asked to explain it today, that I'm doing that because it's very private. It's my experience, and so, but it's just according Guruji. गुरुजी के सान्निध्य में कल ही एक अद्भुत घटना, अद्भुत अनुभूति मेरे समक्ष उपस्थापित हुई कि जब गुरुजी मेरे सामने आए तो मेरे सामने इतना प्रकाश फैल गया कि मेरी आंखें अंधाभित हो गईं और मैं कुछ भी देख नहीं पा रही थी कुछ देर के लिए. And because method that Guruji gave is so correct, I will just impress people who are starting to do Tantra sadhana that it works, and it's possible to be in society and get result, but in your brain to be in other loka and don't perceive everything like just dunya, just. Yes. गुरुजी का संदेश इतना सुंदर और सटीक है कि उसके माध्यम से समाज में, विश्व में रहते हुए भी तंत्र के उच्चतम आदर्शों की सिद्धि की जा सकती है, मोक्ष पथ की प्राप्ति संभव है. And also I will tell for all women who are here, that's not only way for men, because we are part of Shakti in this reality, and we can influence our men too. That's my way. And after I started sadhana, my brother, my husband, a lot of my friends start to do it, but I was first. विशेषकर स्त्रियों से मैं कहना चाहूँगी कि तंत्र और साधना केवल पुरुषों की मोनोपोली नहीं है, पुरुषों का कार्य नहीं है, यह स्त्रियों के लिए भी संभव हो सकता है. बहुत बहुत धन्यवाद.